Matlab, I think most people would. But I also grew up with, idealizing Imran Khan as a cricketer. मेरे कमरे में उसकी पोस्टर लगे हुए होते थे. ये तो बहुत बाद की बात. मुझे ये भी याद है कि जब 92 का वर्ल्ड कप जब जीते थे, I was living in Peshawar at that point. And I was watching it with my cousin, and we were all excited, obviously, कि World Cup जीत गए. Never expected it. Barish helped, everything else helped. And I remember मेरी जो फूफी थी, बड़ी फूफी, जब उसकी speech आई, she was immediately she said something, कि ये देखो इसके बारे में कि ये बंदा सही नहीं है. But we were so excited by the fact कि हम लोग जीत गए, और we didn't want her to spoil that atmosphere. So I remember me and my cousin both telling her कि नहीं आप चुप करें यार, उसने ऐसे ही कर दिया. Now I look back on that thing, and she had actually pinpointed something really sharp and immediately. कि उनको लगा, उनकी gut instinct ये थी कि इस point में when the team was winning, the fact that he didn't think about the other people with him, never mentioned them once, never mentioned the team, only spoke about himself. So she identified a certain trait within him. And now we've seen that over time. I've seen that when he started the Tehreek-e-Insaf, 96 के उसमें elections के time. And उससे पहले, I think the first big interview, I used to be with the Herald at that point. तो एक बड़ा interview हमने पहला किया था Imran Khan का. And the person who was doing it was a journalist by the name of Zaidi Khan, who's now on television. He's also a development person. And Zaidi told us, and he never wrote this. And I even told him, I had him write another piece in EOS, which I now look at, Dawn ka. And again, he didn't mention it. But I thought it was a really interesting thing, because he said that when he was interviewing Imran, when he had to interview Imran Khan, and he was told to get onto the same car with him, वो कहीं किसी rally पे जा रहे थे. And so he said, I sat in, and the first thing Imran said, which publication do you work for, right? So he said, the Herald. And he said, the first thing he said was, Herald? लेकिन वो तो सब atheists हैं, huh? So, and this is the kind of level that we're dealing with, right? But it also, I think, tells you a little bit about him, how his worldview, how he looks at things, right? So I think there are a lot of other things that one can look at, and unfortunately, social media is often not the place to have a reasoned discussion about anything now. Ji, Amber. Ji. Oh, sorry. It is that simplistic worldview, the us versus them mentality. And I think that you see in terms of the rise of Imran Khan, and we're still waiting for the fall, as you pointed out, but is also so closely, inextricably linked with social media as well, because social media rewards anger, it rewards outrage, rewards the simplest solution or interpretation of more complex issues. And I think that's inextricably linked with, obviously, because jo social media istemal karte hain, they're a fraction of the population, obviously, still. We have internet penetration abhi Pakistan mein, which has increased since the last elections, by the way. So it was under 40%, or around about 40%. It's now 56%. And who is using social media? It's elite, it's the middle class. And by and large, I think that sort of macho, sort of nationalist, that Imran image and persona or personality, as I said, that appeals across the board, that Imran Khan projects, is just ideal for social media, also handsome. वैसे गलत परसेप्शन है. हसन साहब ने बताया कि ये एंटी इमरान खान पैनल है. मेरा कोई इरादा नहीं था इमरान खान के खिलाफ बोलने का, लेकिन वो केएलएफ के थैले में जो चेक मिला है उसके बाद बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है. सर, ये अभी हम सेलिब्रिटी वाला आइडिया अनपैक कर रहे हैं. देयर सम आर्टिकल राइटर्स हु से द US election hinged on the fact that Nixon did not use makeup and JFK did. तो वो जो टीवी से शुरू हुआ एक हैंडसम आदमी, एक एस्पिरेशनल आदमी, वो अब पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर फैन कैम्स बनते हैं तो वो इमरान खान के बनते हैं, एम्यूलेट होते हैं, whereas maybe the other leaders are not aspirational like that, are not handsome like that. मैंने एक नवाज शरीफ का भी देखा है. There's fan cam. सिर्फ रोटी खोल दियो. वो सिर्फ एक ट्विटर यूजर ने बनाया. एक ट्विटर अकाउंट है, रोटी खोल दियो, और वो सिर्फ पूरी मीडिया कैंपेन चला रहा है. But generally, if you look at TikTok, how important is that idea of the celebrity, or what American politics में कहते हैं, oh, I can have a beer with him?
आई थिंक ये जो हम वेव देख रहे हैं 2010 के बाद पूरी दुनिया में, जिसको पॉपुलिज्म कहते हैं, आई थिंक दिस जो तुम बात कर रहे हो, दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट. To treat your leader, political leader, like you treat or consume, I would say, any kind of celebrity, चाहे musician हो, model हो, actor हो, actress हो, ठीक है? Because अगर आप देखें, again coming back to मेरी study of middle class थी, and this is all over the world, they consume politics as like they consume any product, ठीक है ना? They politics, चाहे party हो, चाहे वो आपका charismatic populist leader हो, वो एक brand है. आप उसको इसी तरह उससे एंगेज करते हैं जिस तरह आप कोका कोला की बोतल से करते हैं, पेप्सी की बोतल से करते हैं, या किसी और ब्रांड प्रोडक्ट से करते हैं. सो दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट होल वे पॉपुलिज्म. द सेलिब्रिटी, ट्रम्प को देख लें आप, ठीक है? इस तरह और भी बहुत सारे. मोदी, व्हाई इज मोदी ऑलवेज बीइंग सराउंडेड बाय दीज बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, ठीक है? द थिंग इज दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ इट. नाउ कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया, और किस तरह वो जैसे अंबर हसन ने बात की है, ये जो सोशल मीडिया पे आजकल फॉर्म 45 का इतना शोर था, जब मैं वहाँ गया तो मैं यार मैं भी पहुँच जाता हूँ ECP, एक फॉर्म ले रहा हुआ, और उनको कहूँगा यार देखो इस बैलेट पेपर पे मेरा नाम ही नहीं है, ठीक है? और वो मान लेंगे, वो नहीं पूछेंगे भाई तुमने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं ना, तुम तो कैंडिडेट भी नहीं थे. बट मुझे लगा इफ आई इवन उस झमघटे में भी पहुँच जाऊँ कि मेरे साथ भी बुरा हुआ है, तो वो एक न्यूज़ बन जाएगी, उसकी फिर वो बाद में आ जाएगी कि ये जनाब ये तो लड़े ही नहीं थे. और एक दो दफा केसेस इस तरह हो चुके हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच अंबर हैज वेरी क्लियरली स्टेटेड कि जब आप इमरान खान जैसे पॉलिटिशियन हो, या आप मोदी जैसे पॉलिटिशियन हो, चाहे आप ट्रंप जैसे पॉलिटिशियन हो, और लाइन लगी हुई है आजकल, हंगरी में भी एक इस तरह का बंदा बैठा हुआ है, फिलीपींस में है, वगैरह वगैरह. तो दैट सेलिब्रिटी फैक्टर, ठीक है ना? एंड रिमेंबर, आई एम स्टिकिंग टू माई claim that the core constituency of Imran Khan is your urban and peri-urban middle classes. लेकिन इसी किताब की जो मेन थीसिस है, which is basically कि पंजाब बेस्ड है ज़्यादातर, कि वहाँ यही मिडिल क्लास, उसकी दो फैक्शंस हो गए, दो सेगमेंट्स हो गए. एक मिडिल क्लास उभरी थी ज़िया-उल-हक के ज़माने से, वो बड़ी हो गई. उसमें से फिर मुशर्रफ साहब जब आए, वो जो क्लास थी जो अपने आप को कॉस्मोपॉलिटन समझती थी, वो मुशर्रफ के साथ लग गए, ठीक है? शायद उनको बेनिफिट्स पूरी इस क्लास ने किया ज़िया की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, लेकिन वो स्प्लिट आया. आप नोटिस करें, जो मेरी अपनी स्टडी बताती है, मुशर्रफ व्हेन इट केम टू पावर, देन यू सॉ के जी एनलाइटेंड मॉडरेशन, मुशर्रफ, तो उसमें जो अपने आप को ज़रा ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन समझती थी, तो वो मुशर्रफ के वो बन गए. एंड दिस वाज at that time, till that time, a very apolitical class. ना ये इनको पता था सियासी जमातें क्या होती हैं, ना उनको पता वोट क्या होता है. 1990 से कुछ नहीं पता इनको. कह सकते हैं this was politicized and turned into a constituency eventually, which Musharraf wanted to use when he aspired that after his retirement he might re-enter politics as civilian, and ये constituency. But that constituency was given to Imran Khan because उसने promise था. Because by that time Imran Khan was basically a one-man party, but he had become a very popular TV personality. मतलब हामिद मीर के शो में वो रोज बैठे होते थे, रेटिंग्स मिलती थी. तो फिर वो आपने देखा, फिर लाहौर का जलसा हुआ 2011 में. एक हाइपोथेसिस थे कि यार लेट्स ट्राई दिस गाय आउट, कौन आता है. तो उस पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, हजारों लोग आए. आई वोंट बी एग्जैजुरेटिंग इफ आई से 60 to 70% जो उस जलसे में आए वो आपकी इस क्लासेस से थे, जो कभी जलसों पे जाती नहीं थी. दैट इज व्हेन आपका सही मायनों में मेरे ख्याल में इमरान प्रोजेक्ट किक इन करता है. एंड अब आगे देखो क्या होता है. आप ये आर्गुमेंट केपी पे भी एक्सटेंड करते हैं, वेयर वी सी अ लॉट मोर वाइडस्प्रेड. देखिए केपी में भी बड़ा मसला है. केपी में फॉर एग्जांपल एएनपी जो थी ना, एएनपी वाज रिप्रेजेंटिंग योर लेट्स से उनके क्या होते हैं, ट्राइबल होते हैं ना. तो केपी में जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास उभर रही थी, दैट द पश्तून नेशनलिस्ट, फर्स्ट नेशनल अवामी पार्टी एंड देन अवामी नेशनल पार्टी, दे वर बिहेविंग एज representations of these bourgeois or petty bourgeois जो पुराने terms हैं उनकी, ठीक है. So Imran Khan captured that as well. And KP में भी, लेकिन like I said, the study is mostly about Karachi and Punjab, but Pashtun में भी I think I would say is the same thing.
Yeah, so I'd like to sort of add to this a little bit and expand on it. I think the reason why I say that I think Imran Khan has cross-cutting appeal, why his political party, and I realize that most political parties have both conservative religious elements as well as more left-leaning social elements, and then there's a centrist sort of middle ground that you see. But the reason, for instance, in KP as well, I think Imran Khan has absorbed, or Pakistan Tehreek-e-Insaf has been able to absorb the ANP, and ANP, by the way, if you talk to young people, they're not top of mind. They have not captured the imagination. उसमें आपको religious minded जो थोड़े बहुत हैं, इस वक्त आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के दरमियान जो बातचीत चल रही है या उनकी पार्टी के दरमियान जो चल रही है वो क्या है? The competition before this was over that vote bank. जो JUIF का भी था, जो कुछ हद तक क्योंकि जमात इस्लामी के साथ उनका इत्तेहाद भी था खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ भी था. But Imran Khan has successfully captured all these disparate groups and brought them together. So young people who probably tend to be more left-leaning as well, religious-minded, that's because centrally, even though I would say very clearly that other older mainstream, not mainstream, but political parties do have some kind of central ideology that you could identify to some extent. Whereas the Pakistan Tehreek-e-Insaf does not have an ideology. It's idolatory. It is around, obviously it revolves around the personality of Imran Khan, which is why his party and his appeal is so cross-cutting. इसमें अमीर सिंध आप जर्नलिज्म पढ़ाती भी हैं, वर्कशॉप्स भी देती हैं. कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं जिन्होंने लिटरली घंटे बाद ग्राफिक्स दे दिए जो पार्टीज ने यूज़ भी किए. उन सोशल मीडिया पेजेस की खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके इलेक्शन सेल नहीं है. तो एज जर्नलिस्ट, how do they avoid, which we've seen they have not avoided in the past, falling into this trap of becoming the news themselves? Because वो आपको इतने likes और shares आ रहे हैं for saying something in support of PTI, then they chase that as opposed to sticking to what their job is, which is finding out truth from propaganda. I think that's also linked to social media, and I'm not saying just because, so there's a couple of reasons at play here. One, media organizations, obviously they need to survive. They're also expanding into the digital space. They don't have as much human resource. So obviously social media has impacted their business models as well as other reasons. There's censorship in which they've lost credibility as well. That's degraded over time. They don't have as much resource. But I think the other phenomenon in it, which I think is very interesting, is that with social media, you are flooded with so much information. You have so many diverse sources of information that it is very, very hard, and nobody, and I don't blame anybody, is able to quickly judge what is the truth and what is not. That takes time, thought, pausing, breaking. It's what Hasan was saying as well. कि आपको थोड़ा सा सोचना होता है, थोड़ा सा ठहराव आना होता है, which is not possible when you're flooded with so much information, and that's where Tehreek-e-Insaf is so successful. They're very quick. It's, and I will say just because I'm running an election fact-checking organization as well, we saw massive spikes in disinformation a week before the elections, and they have continued to rise. And I must say that a lot of this is because it comes from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. There's nothing new there. I'm not saying other parties don't do it. They've really picked up their game. We saw that there was a lot of AI manipulation that other parties were doing against Imran Khan's party that we saw. We also saw, for example, that journalists were being discredited. That was from the PMLN. So it's not like they're doing it. But what the Tehreek-e-Insaf has is a lot of people who are willing to flood the information space with so much information that A, journalists who are credible don't have the time to fact check, or B, because, well, you just need to make money and you need to survive and you need to stay relevant. So I think those are two things that are at play here. Hasan, yeah, please add. So I just wanted to say, I think we also need to separate out two things. One is the Project Imran thing, which is a very engineered sort of conscious thing, right? But then there's another part of it which has to do with the subtitle of your book, the middle class, right? Now, around the world, in terms of political theory, one of the things that happens is if, once the middle class achieves a certain amount of economic power, the next thing is always the lack of political power, right? So the lack of political power, for example, let's say in China or
elsewhere, where you feel constrained कि अच्छा मेरे पास पैसे तो आ गए हैं, but I can't assert myself politically, right? And that's a very natural thing. And in Pakistan, I think what has happened is that when incomes rose slightly, so the natural thing was that the next thing is, do we have any representation in the corridors of power, in parliament, etc.? And for a lot of young people and for a lot of, upwardly mobile people, there was a lot of resentment at the mainstream parties because they felt to them, I'm not saying they are, they felt to them that these are very controlled in certain families, right? So वो एक general, whether उसका जो क्या कहेंगे उसका exhibition जो है या उसकी nuances उसमें सही आते हैं नहीं आते, I'm not talking about that, right? And again, I'm not trying to make a comparison between the two, but look at what happened with Hitler, right? Hitler came to power on the back of the popular vote, right? But once he was in power, he was able to then wipe out the entire opposition. Because anyone who, I'm not drawing a parallel between Imran Khan and Hitler, but I'm saying is tarah hua hai in the past, right? You can come into, what do you, and this is a problem all around the world, if someone comes into power on the back of democracy and then gets rid of democracy, right? How do you deal with something like that? And this is, I think, a similar situation that we are facing here. Hasan, that's a great point. और किताब में भी मैंने ये एक अजीब से इसको paradox भी कह सकते हैं. इसका resolution क्या है? And I've discussed the whole Hitler thing. And very interestingly, when I was researching this, तो वहाँ पे भी ऐसे थे जब when Hitler won, everybody knew what his agenda was, ठीक है? Everybody knew वो क्या कर सकता है. तो some social democrat के जो voters थे और left के voters थे, जो liberal voters थे, उन्होंने कहा यार ये बहुत खतरनाक चीज़ हुई है. तो मेरे पास एक कटिंग है जर्मन अखबार की, उसकी हेडलाइन है, उसमें उनसे एक एडिटोरियल लिखा, अखबार सोशल डेमोक्रेटिक अखबार थी, एडिटोरियल लिखा, जो भी हुआ वी हैव टू एक्सेप्ट द विल ऑफ द पीपल. नाउ द सवाल है कि व्हेन यू नो यू हैव इलेक्टेड समवन who is going to come in and destroy institutions and do what not, is capable of doing that, तो यहाँ आके हम फंस जाते हैं कि ठीक है, we have to respect the people's will, लेकिन do we need to intervene? Does the constitution give us enough leverage, space कि इस तरह की चीज़ अगर हो जाए, should the state as a whole intervene कि भाई खतरनाक चीज़ आपने elect कर ली है? Because हम बड़े आराम से कह देते हैं people's will. अगर people's will हो कि यार ये करो कि वो फलां बिल्डिंग को उड़ा दो और सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा उसको, तो should we let that happen? तो ये सवालात हैं, मैं इसके जवाबात नहीं दे रहा, लेकिन I think intervention की space होनी चाहिए. ये सवाल के should the will of the people, should democracy be respected? I think पाकिस्तान में तो सवाल नहीं है. हमारी जो तारीख नहीं, अभी हमें कहा जा रहा है ना कि accept कर लो. अब पहले तो कहा कि accept will of the people. आजकल तो बड़ा मजा आया हुआ है. Nobody is accepting anything. ठीक है ना? It started off. बज़ाहिर जमहूरियत है, लेकिन आइन और कानून बेमानी है. Now. But there's another issue here, right? So this is जो inevitably मेरे झगड़ा, अगर किसी चीज में argument कहना चाहिए, झगड़ा नहीं, जब होता है वो इस पे होता है कि for example अभी जो हुआ है elections में, right? This is my estimate that exactly the same thing happened as happened in 2018, right? On almost the same number of seats, वो इधर हुई थी उधर हुई थी जहाँ भी. But the problem here is कि if you come with the argument कि it has never happened in the history of humankind or Pakistan even, right? That is not true, right? This is exactly, and I've had arguments with people who have said कि नहीं इस तरह की repression कभी नहीं हुई media के साथ. We lived through it. I was there, right? We knew when General Faiz was threatening us, right? We knew कि वो क्या कह रहा होता था कि ये करें वरना हम ये कर देंगे. अब वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं कि जी General Faiz, who nobody at that moment even thought about this, कि General Faiz had been out of the ISI for 6 months by the time he claimed कि वो मुझे आके कह रहा था. And then General Faiz himself apparently also said the same.
मौलाना साहब ने कहा गलती से मिस्टेक हो गई. गलती से मिस्टेक हो जाती है मंटो की तरह. बट सो आई एम सेइंग द पॉइंट इज कि एक कोई बेसलाइन तो हो ना. आप ये तो नहीं कह सकते कि ये पहली दफा हुआ है. अगर हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इसमें, and I actually do think there are lots of irregularities in this election, but there were similar things that happened in 2018. Now, had that thing not happened, had Imran Khan not been forced into power by creating those 20-30 seats, maybe we wouldn't be at this stage right now, right? So the question then becomes, okay, how far back do you go, right? But one has to, kahin to wo aapko acknowledge. मैं ये भी नहीं कह रहा कि go and change because you can't change the past. I'm just saying just acknowledge. अगर आप कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, also say कि हाँ जब हमने हमारी तरफ या हमारे हक में ज्यादती हुई थी, उस वक्त हमने कुछ नहीं बोला था, and that was wrong, right? देखें ऐसी बातें ना करें. हमारी गाड़ी बाहर खड़वाइए. हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी है, वीगो अंदर आ सकती है. सर हम ये अनप्रेसिडेंटेड का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. आर कनेक्शन टू आवर ओन हिस्ट्री हैज़ बीन डिलिबरेटली सेवर्ड. तो ये जो आइडिया है रियासत मदीना, जो आपने अपनी किताब में तो बताया पहले नया मदीना के नाम से आ रहे थे, तो दीज मूवमेंट्स और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही है जिसने क्लासिकली मज़हब का इस्तेमाल कर कर एक लीडर एक बनाते हैं. इमरान खान has been able to maybe capture that a lot more than people in the past. But is there anything unprecedented about this use of religion or Islamic touch politics that we see? No, absolutely not. It even existed before Zia-ul-Haq. अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का when it was back in 1970 के इलेक्शन के लिए जो उनका मैनिफेस्टो पढ़े, तो they also talk about a state, a socialist state which was like a state and supposedly a state in Medina in the 7th century. ठीक है, वो तो उस वक्त ही बात कर रहे थे. और जब पाकिस्तान बन रहा था तो उसमें जो जिन्ना साहब के साथ जो उलेमा थे जिनकी मदद ली गई थी स्पेशली पंजाब में, वो भी बात कर रहे थे कि हम एक नया मदीना बनाने चले, पाकिस्तान विल बी द न्यू मदीना. तो ये वहां से इवॉल्व हो रहा है. और फिर आप आ जाएं 77 में निज़ाम मुस्तफ़ा, वो भी उसी स्टेट की बात कर रहे थे. मैंने एक्सप्लेन किया, मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं कि वो स्टेट था नहीं ऐसा. और फिर ऑल द वे टिल रियासत मदीना. आज शायद किसी ने तहरीक इंसाफ ने आज एक नया कुछ निकाल दिया कि हम वो फतेह मदीना की बात कर रहे हैं, फतेह मक्का की बात कर रहे हैं. तो ये तो इसकी तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है. और ये हिस्ट्री मैं वही कह रहा हूँ, ये कहाँ से आती है? ये आपके जो मिडिल क्लास में इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, चाहे राइट के भी हों, भुट्टो साहब के पास तो लेफ्ट के थे, इस्लामिक सोशलिज्म उन्हीं का था, तो उन्होंने भी इसी रियासत की, इसी तरह की रियासत की बात की थी. आई थिंक इट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग कि जो मासेज होती हैं ना, बस इस्लाम के नाम पे जो भी कर दो वो खरीद लेती हैं. मेरा आई डोंट अग्री विद दैट. हमारा बहुत ही बिल्कुल टिपिकल वेरी क्या कहते हैं, घिसा पिटा क्लीशेड आइडिया हो गया ऑफ द कॉमन मैन. अगर आप जाएं ना, आप कराची से बाहर निकल जाएं, चाहे आपने सड़क पे निकल जाएं, ठीक है, जब आप बात करते हैं ना सो कॉल्ड कॉमन मैन, ठीक है, हम भी कॉमन हैं, एंड यू टॉक टू देम अबाउट डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडिंग इस्लाम, तो आपको बहुत किस्म की वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, वैरायटी ऑफ क्या कहते हैं ओपिनियंस मिलते हैं. तो मेरे ख्याल में बहुत ही इंटेलेक्चुअली लेजी है ये आर्ग्यूमेंट करना कि जी बहुत हम कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं, नॉट रियलाइजिंग कि कंजर्वेटिव होंगे एज अ होल जिनको ज़बरदस्ती बनाया गया, लेकिन इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, इतने सारे सेक्ट्स हैं, फिर सब सेक्ट्स हैं वगैरह वगैरह, हर किसी का अपना रियासत मदीना का आइडिया है. तो तुमने हिस्ट्री बोली तो भाई ये तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट जिसको कहते हैं उस वक्त से चली आ रही है. नथिंग न्यू अबाउट इट. इसमें अली उस्मान कासमी साहब की नई किताब आई है, प्लीज़ कल उनके सेशन पे जाइएगा, पढ़िएगा. अंबर, एज अ जर्नलिस्ट, when these things are happening, when the notion of religion is almost fused with the notion of the leader, and any criticism of that leader is akin to blasphemy, and we know journalists who've had blasphemy campaigns against them on Twitter just for merely criticizing a leader for their use of religion, not religion itself. How difficult does it become to call this out in a country like Pakistan where you don't know who has a gun? Ooh. Okay. I think सलमान तासीर के कत्ल के बाद तो स्पेस शिफ्ट हो गई थी. And I will say that I think the tragedy and the horror of it is that it could be anybody, right? Agar aap as if you are discussing it within
your organization, आप अपने दफ्तर में बात कर रहे हैं, आप घर पे बात कर रहे हैं, who is listening and who might get upset is I think the scariest thought that comes to my mind. But so that space has changed. That's change, and I don't think it's returned at all. You talked about criticizing leaders and that being almost the same as being blasphemous, obviously. Yes, I think that we've already made that, we've seen that equated, especially Jab Imran Khan before his rise as well, when he was rising before the 2018 elections while he was in power, any criticism was met with massive backlash. And if you spoke against the backlash, you got even more backlash. And I think the scary thing was that, and the other scary thing about that backlash against a particular leader, Imran Khan in this case, I don't think I've seen that phenomenon with any other political leader, which is that then the attempt would be to find something to use against you. As you pointed out, there were journalists who had these charges against them. So to show, as Hasan said, that maybe you're not just, it's not shifting the focus away from blasphemy against a leader to maybe blasphemy in other areas of your life. कि आप atheist हैं, आप खूनी liberal हैं, और this is what it proves it, or you know आप गद्दार हैं. I think that's what it is, because again I want to re-emphasize that the personality of Imran Khan includes all of these elements, which is you know, the hyper-nationalism in one way, well, I don't know if it's anti-West really, to be honest, क्योंकि कभी lobby करते हैं और कभी नहीं करते हैं, तो ये भी मुझे भी इबाम रहता है, but it doesn't really matter. He's able to create that persona where any kind of attack, whether it's religious or anti-national, can be made against you. Hasan, as somebody who's also faced incessant trolling and was also involved in a feud on Twitter, would you say it's this middle class angst that a certain class has felt that they were inheritors of the Pakistan project, or the colonial class, and the polarization that we see and the anger that we see, or these discussions that we see where people in families are fighting over Imran Khan or friends are blocking you? मैं personal हो रहा हूँ, अपनी कहानियाँ बता रहा हूँ. तो ये क्या phenomena है जिसकी वजह से जो polarization हमारे इस class में आई है? Why was Imran Khan able to fracture that class that way? Why Imran Khan was able to capture? Or was he? No, I mean, obviously, but वो तो quite obvious. We already talked about why, right? मेरे ख्याल से फर्क सिर्फ ये हुआ है, polarization किसी ना किसी तरह. I mean, I think भुट्टो के time में there was also polarization. There was a anti-people's party and there was a pro-people's party. ये इस तरह की चीजें रहती हैं. जो फर्क आया है, वो शायद ये आया है कि for the first time, because of social media, even within families disagreements होते थे, right? ये मतलब कोई पीपल्स पार्टी सपोर्टर है, कोई नवाज शरीफ सपोर्टर है, उनके आपस में नहीं होती, बदतमीजी पे बात नहीं आती थी. वो जो सोशल मीडिया का एक आपको स्क्रीन मिल जाता है ना, which you can sit behind and think that actually there's a very interesting story I should tell you. So अभी yesterday or day before, Barrister Gohar of PTI nominated this man called Salar Khan as the Balochistan Chief Minister candidate, right? And it turned out that he had actually not even contested the elections for the provincial seat, right? He contested in the National Assembly seat and lost. I mean, they think वो हमें हरवाया गया जो भी. I was looking at it and suddenly it hit me who this man was, right? So this is a man, मेरा एक run-in हुआ था, since you mentioned it, on Twitter with someone who मतलब बहुत ही जो कहते हैं गलीज गालियाँ वालियाँ पे आ गए थे वो, and he turned out to be doing it from, unlike most trolls, doing it from his own account, and then the bank that he worked for dismissed him, right? So of course, because he was a PTI supporter and Imran Khan supporter, well, PTI sort of all ganged up on me. I mean, at one point I had to block like 5,000 people. गालियाँ थी, there was nothing else, right? मेरा और नदीम का तो ये रोज का है. हाँ, नहीं, so no, so at that same time I had gone to the Quetta Literature Festival, right? And वहाँ एक session था, so I was sitting outside making some notes, and suddenly I looked up and there was like 6 guys standing in front of me, right? And they said कि हम आपसे बात करना चाहते हैं. So I thought that they're here to beat me up, right? Because they were supporting that guy, right?
And then they told me कि असल में तो हमारे सैकड़ों supporters बाहर खड़े हैं, हमने उनको वहाँ रोक दिया, वरना हमने कहा भी हम बात करके आते हैं. The guy who was leading it was Salar Khan, right? This guy who, right? But I was saying to someone, I said, you know, to be fair, जब बातचीत आमने सामने हो रही थी, he was never, उसने बदतमीजी नहीं की, उस वक्त नहीं की. Online की बात अलग है, बाद में, so he wanted me to forgive the guy, right? And I said, fine, I'll forgive him as long as he writes a letter to all the people that he's abused and apologizes, right? And so of course उसने कभी नहीं लिखा, तो बात आई गई होगी. लेकिन later on I have forgotten why, but both Salar Khan and I blocked each other on Twitter. But this was the guy, right? So I'm saying कि जब आपके सामने होते हैं ना, थोड़ा सा लिहाज आ जाता है. But somehow, and this is true around the world, when you have a screen in front of you, you suddenly feel, you know, bereft of any consequences. तो फिर आप जिस तरह भी चाहे बात कर लें. अब मैं बहुत दफा मेरा जो मसला होता है वो ये नहीं कि someone disagrees with me, right? मुझे सिर्फ ये कि don't get into an abusive thing because then I will not respond, right? मुझे कोई शौक नहीं है कि गालियों से जवाब देने का ना. तो मैं ये कि भाई आप सीधी बात करो. We might disagree, you know, that's fine. But no reason to get abusive, and that's I think where the difference has happened. That's why the polarization has happened. Even on a political level, जब आप सारा वक्त दूसरे को गाली देते रहेंगे, how can you? Although one shouldn't say this now because Fazlur Rahman is sitting with PTI, right? So I mean, the next headline would be like, you know, Diesel with Yahudi agents. Huh? You know, that's the thing because that's what they were calling each other. But the thing is कि अगर आप इस level पे ले जाओगे extreme positions पे, then it's much more difficult to walk back. You know. इसमें अंबर ने उसी दिन ट्वीट कर दिया था कि डीजल की प्राइस बढ़ गई है. Yeah, but I have one question of Nadeem actually, if I may be permitted. Yeah, and then we'll open the floor for questions. I have a question here. Do you think Nawaz Sharif has also misread Imran Khan's appeal and a certain middle class in the Punjab that used to vote for Nawaz Sharif? Because his statement कि जो हमारे यहाँ जलसों में है वो मम्मी डैडी नहीं है, उससे बहुत लोगों को तकलीफ पहुंची है because they keep raising it. So I sort of want to address that question to you. I think he has misread it. I think he's conscious of the fact कि एक particular, like I said, मेरी तो वही thesis है. तो पंजाब में ये दो factions हैं, दो segments of large middle class हैं, urban areas and peri-urban areas में. एक को जिसको वो मम्मी डैडी कह रहा था, वो मैंने आपको बताया, वो उसका मकसद ये वो मिडिल क्लास थी जो मुशर्रफ की आके गोद में बैठ गई थी, मुशर्रफ को मिसाया बना लिया था. और दूसरी वो है जो थोड़ी कंजर्वेटिव थी लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव थी और नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई थी ज़िया के बाद. So he is very conscious of that, and they were, I think, also looking beyond Lahore, and they were looking at these peri-urban and rural areas of Punjab, where आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे, and they were expecting more votes from there. But I think they were conscious of the fact कि Lahore में threat था कि they will not be able to sweep Lahore as People's Party once upon a time used to, and then the PMLN. I think they were very concerned, और हमने देखा Lahore में हुआ क्या. वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है कौन सी सीटों में. आई एग्री विद हसन के हो सकता है जिस तरह 2018 में 20-25-30 सीटें दे दी गई एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी हुई होंगी कोई, लेकिन इस तरह की कोई वाइड स्प्रेड रिगिंग नहीं थी. बट आई वुड स्टिल सी दिस इलेक्शन एज एन, आई थिंक, ओवर आर्चिंग. आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं कि लोगों का मतलब ट्रेंड क्या है, व्हाट सेंटिमेंट क्या चल रहा है. I think one can use these election results to understand that. And वो मम्मी डैडी वाली बात है, definitely मम्मी डैडी बढ़ रहे हैं शायद. और लोग मम्मी डैडी बनना चाहते हैं. हाँ, अगर वो एस्पिरेशन है तो 100 में नहीं, वो अलग वाला डैडी है अंबर, ये नई जनरेशन अलग सोचती है. There's a question there. तो पहले उनको माइक दे दीजिए, फिर खातून को दे दीजिएगा, फिर the guy in the west. बात ऐसे करें कि आप ट्विटर पे ब्लॉक ना हो हमसे. जी सर, नाम भी बता दीजिएगा अपना. मेरा नाम अदनान है. पराचा साहब से मेरा सवाल है कि आपने कहा कि मिडिल क्लास सेमी अर्बन क्लास को लिंक किया इमरान खान से, तो आप इसको क्या नेगेटिव वे में कह रहे हैं कि मिडिल क्लास और अर्बन सेमी अर्बन, इसको आप नेगेटिव वे में क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हो, क्या कोई बुरी बात है? एक चीज़. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अगर मेजॉरिटी वोट गलत कर रही है किसी को, और इन भाई ने हिटलर से भी लिंक किया और बाद में कहा कि मैंने लिंक नहीं किया, ये भी एक तरीका होता है लिंक करने का. तो उसमें क्वेश्चन ये है कि
जो आप कह रहे हैं कि स्टेट को फिर इंटरवीन करना चाहिए कि लोगों ने गलत वोट किया है, तो हाउ वुड यू डिफाइन स्टेट? कोर कमांडर्स, ग्रेड 22 CSP ऑफिसर्स, you will call them a state to negate the opinion of majority of people के वो लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, वो गलत फैसला कर रहे हैं. तो how would you define state? मतलब ये तो मैं आपको रेगुलरली रीड करता हूँ, I mean for last 20 years, और जस्ट मेरा एक कमेंट है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव ही बात करते हैं उसके इस फिनोमेना. ये तरीका होता है लिंक करने का कि पहले सवाल पूछो फिर ओपिनियन दे दो. मिडिल क्लास के let's बारे get से आपके let's we got the question, let's stick to questions as opposed to comments. दो क्वेश्चन पूछे मैं भूल जाऊंगा. let's answer the questions. पहली बात ये है जो मिडिल क्लास, आई डोंट सी इट एज अ नेगेटिव थिंग कि इसको मिडिल क्लास सपोर्ट मिली है. मैंने मेरी किताब एक्सप्लोरेशन है कि क्यों मिली है. मैं तो वाकई जेन्युइनली क्यूरियस था कि व्हाई इज ए एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन हो चाहे वो ट्रेडर क्लास हो वगैरह, क्यों. और ये ओवरऑल पूरे इंडिया में भी यही हो रहा है. वहाँ की जो एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास है, वैसे तो बहुत मॉडर्न हर चीज में, मोदी को वोटर्स हैं, स्पेशली हिंदू जो हैं उनके. तो मेरे ये क्वेश्चन है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं उसको डिस्कवर एक्सप्लोर किया है. मैंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव है. दूसरा आपने जो कहा ना, स्टेट ओवर हियर पाकिस्तान में हम मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को समझते हैं, ठीक है ना, बट स्टेट के दूसरे और इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं. स्टेट का मतलब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही है इस मुल्क में. मैंने सवाल उठाया है कि क्या इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर बंदा एक हिटलर को, अब मैं नहीं कह रहा इमरान खान हिटलर है जनी, उनको मेरे ख्याल चांस नहीं मिला उनको. बहरहाल मेरा सिर्फ सवाल है कि क्या होना चाहिए स्टेट में, क्या हमसे ज्यादा वाइज लोग बैठे हुए हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि यार हिटलर को इलेक्ट कर दिया ये तो स्टेट को उड़ा देगा. ये सवाल है मेरा ये ओपिनियन भी नहीं है, मेरा ये सजेशन तो डेफिनेटली नहीं है. तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं स्पेशली इन दिस डे एंड टाइम जब दुनिया पूरी इनगल्फ हुई है पॉपुलिस्ट लीडर्स. अब देखें ना, अर्जेंटीना में एक पागल आ गया है, ठीक है ना, वो लूमिनाटी और पता नहीं क्या. यार मेरे ख्याल में तो स्टेट हैज टू इंटरवीन, ठीक है. वो मेरा उसके बारे में ओपिनियन है. बट ये भी एक फिनोमेना विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, ताकि एक डिस्कोर्स बने, एक अंडरस्टैंडिंग बने क्यों हो रहा है और इसका तोड़ क्या है. सिंपल एज दैट. मेरी जान टाइम होने वाला है. देयर इज टू मेनी क्वेश्चंस व्हिच इज व्हाई मैंने आपको काटा था. ब्रीफ रखिए, 15 मिनट है मेरे पास, सिर्फ 15 मिनट भी नहीं है. जी सही. फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपॉलजी. जब पराचा साहब ने कहा कि पीटीआई की सपोर्ट अर्बन और पेरी अर्बन है, तो बेसाख्ता हंसी निकल आई, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद भी अगर आप ये कह सकते हैं, जहाँ से आपको पता है कैसे वोट पड़ा, तो बड़ी अजीब सी बात है. थैंक यू सो मच अंबर, आपने बताया कि जी क्रॉस कटिंग सपोर्ट है और एज वाइज भी क्रॉस कटिंग है, क्योंकि जो गाली दी जाती है यूथिया, ये मतलब ये चीज़ नहीं अब इलेक्शन रिजल्ट्स में बेर आउट करती. देखिए पैनल जो है वो एंटी इमरान ना हो, लेकिन ये बायस तो पैनल जरूर है. और क्वेश्चन जी सवाल बिल्कुल है. तो देखिए अंबर, आप किस तरह कह सकती हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि पीटीआई की आइडियोलॉजी नहीं है. अगर आप देखें थ्रू आउट इमरान खान किताबें एक ब्रॉड ट्रेंड नज़र आता है, और वो आजकल की यूथ के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ भी रिजाउंड करता है कि हम लोग वेस्टर्नाइज्ड हैं लेकिन हम एंटी वेस्टर्न हैं अपनी पॉलिटिक्स में. ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल ट्रेंड है जो शायद हम इग्नोर करते हैं. तो प्लीज़ अब बताइए कि आप क्यों इसको इग्नोर करेंगी. और दूसरा, नदीम साहब, आपने किस तरह इलेक्शन की रात को जहां कह दिया कि एमक्यूएम ने पीटीआई को वाइप आउट कर दिया कराची से, हाउ कैन यू गो बाय दीज रिजल्ट्स, और एमक्यूएम जैसी जमात एवरीबडी नोज को तीसरे चौथे नंबर पर आए, आप कैसे कह सकते हैं. तो फिर बात तो ये होगी कि यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और आपकी अक्सर कमेंट्री ऐसी ही है. अब मैं जवाब दे दूं. अब जवाब दे. पहला सवाल आपका था कि इलेक्शन रिजल्ट्स ऐसे आए हैं कि मम्मी डैडीज ने इलेक्शन, ये था ना आपका पहला, कि बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ने वोट दिया है पीटीआई को, ये था ना आपका. तो इसका एक सेकंड, उसका मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर रही हैं इलेक्शन रिजल्ट. जहां जीते ही वहां आप एक्सेप्ट कर रही हैं. कराची में नहीं जीत सके, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो बता रहा हूं कि ये हुआ कराची में. हाँ, आपने किताब पढ़ी है बाय एनी चांस? So it's the book might go into a lot more details, and it's fine to agree and disagree then. But Amber के आपने काफी बोला था, तो let's get Amber's reaction to
the ideology question. Right. Okay. So in terms of the idea, West and anti-West, I think that's what you said, that you think that Imran Khan's ideology would be, right? I mean, I would question that. I think that given that Imran Khan, when he was in power, was looking at very cordial relations when Donald Trump was in power. So is it please, let's panel, there's a reason we're... So are we talking she's rhetoric or ideology? Which one? Because I can address both. You spoke about ideology, and I spoke about ideology, and I'm not talking about rhetoric, right? So let's look at Imran Khan's dealings when he was Prime Minister and what he was trying to set up. So he was looking at a very good relationship when Donald Trump was in power, when Joe Biden came to power and Pakistan lost its importance. He also lost that contact. We also saw that when he talked about the whole conspiracy to oust him, in which एक तरफ हमें यही नज़र आ रहा था कि उन्होंने अपने जो जलसे में लहराया था और जिस तरीके से उन्होंने एक अंडर सेक्रेटरी जो है of the State Department, let's unpack that a little. He said basically that एक under secretary State Department का था who through Bajwa had him ousted from power. That was a conspiracy theory. Does that mean that this is anti-West? But at the same time, we also see that Imran Khan has also actively been paying a lot of money for lobbies in the West, in the US. So what ideology are we talking about? I'm really, I don't understand. So I don't see an ideology, and I may be wrong. Obviously, you have a right to your opinion. I personally don't see an ideology or an anti-West ideology. We just have 5 minutes left. This back and forth will go forever. So let's get more questions. We're here after the session. You can surround us. Security, please. Ji. नहीं, 2 सवाल के बाद हमने माइक ही बंद कर दिया। जी 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 सर। Assalamu alaikum. I'm a writer with the TFT Naya Daur. My question is, I did a survey last year. अपना ही बंदा है। इसीलिए माइक। So, in PTI support base, that's talking about democracy right now, 84% of the respondents in the survey that I did were unfamiliar with the fact that the vote of no confidence is a part of the democratic setup. Brief रखिए please कुछ सवाल है। No, it's brief. I'm just asking you, what proportion of the PTI support base do you think is plagued by lack of awareness? ये तो हमारे पास डेटा नहीं होगा, but नदीम। No, but general knowledge. देखिए, a lot of young people do support PTI in cities especially. A lot of young people don't know a lot about history, and I'm not being condescending at all. हम सबका ये हाल था जब हम भी अपने early 20s, late teens में हमें नहीं पता था 1970 में क्या हुआ था, 77 में क्या हुआ था, वो तो बाद में पता लगा. So yes, I'm sure they don't know कि vote of no confidence भी एक constitutional तरीका होता है ouster का. They didn't know. Constitution भी उन्होंने बाद में जाके शायद थोड़ा पता लगा Constitution में क्या क्या लिखा गया जब उनके against cases हुए. So as they go on, I think hopefully they will learn more and more कि पाकिस्तानी सियासत क्या होती है, Constitution क्या होता है, parliamentary democracy क्या होती है, martial law क्या होता है. अल्लाह करे ये कभी ना पता लगे कि martial law क्या होता है इनको. जिन लोगों के पास माइक्स हैं, please, there are too many people who have questions. So whoever is close to whoever has the mic, please, Mrs. Khan का अगर सवाल है तो उनका प्लीज मैं लेना चाहूंगा. पीछे लोग कह रहे हैं हमारे पास आप नहीं आ रहे, तो माइक वाला पीछे चला जाए और अपनी तरफ से किसी को माइक दे दे. जी. Now that he's joining hands with these religious parties, does his party become more religious and more Riyasat-e-Madina type? And the other thing is, I read your columns very avidly, and I'm very sorry to say I'm talking about the devil's advocate, and I hate the analogy, but like Maryam Nawaz and the other Nawaz, you seem to come back to Imran in all your articles rather negatively. Why is that? देखिए, आजकल everybody is talking about him. That's what Imran Khan wants, basically. That he wants to remain in the news. We've been talking about Imran for years now, especially after he got arrested. ठीक है?
So actually there is a readership about, like for example, why is, अगर television on कर लें आप, जब vlogs देख लें, 99% is about Imran Khan, ठीक है? And negatively, positively नहीं होता. I am बार-बार मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये image बना दिया जाता है just because I don't agree with someone or critique him or her on policy, तो मैं negative हो गया. No, it is actually trying to explore and understand what this phenomena is, जो 10 साल से बन रहा था, अब तक चल रहा है, and वाकई एक genuine उसमें है, curiosity है कि कौन है, क्या है. I don't write columns कि मैं इन बोलूँगा इस आदमी को ये जेल में रहना चाहिए, इसको या नहीं. I don't have those sort of opinions. I am seriously, और ये पूरी किताब है ही ये कि मैं explore तो करूँ इस आदमी की सियासत क्या है, इस आदमी के वोटर कौन है, इस आदमी के सपोर्टर कौन है. I think those sort of studies are necessary because he is a phenomena. That's all. And there is no negative, positive about it. बहुत कम वक्त रह गया है, तो जिसके पास भी माइक है वो सवाल पूछ ले. जी जी जी. आप बोल लें, I can hear you. I'll repeat it. Thank you. Let's get Hasan. Hasan has not answered a question. Hasan, and Amber and Hasan, I think you guys should answer it. अब मसला ये है कि whatever I say is going to be taken one way, but my personal opinion, जो आपने पूछा है, I agree with you. I think the characteristics of PTI so far are more like a cult rather than a political party. And I think what will happen is, in a cult, the problem is that if you remove the head, the whole thing crumbles, right? I don't think at the moment, they might evolve, at the moment that there is enough in the second tier to be able to take over the kind of charisma that Imran Khan has. Let's get one more question. Thank We you. literally just have a minute. जी, जिसके पास भी माइक है पूछ लें. जी जी जी. I'm sorry, I don't wish to enter the for and against debate, but what I would like to ask you is, and I did not realize that it's purely based on political evolution of the person you're talking about. What my question is, if we ignore the last 22 years of his political existence, do you think, and I'm quoting your title, do you think he was a myth before that, or was he not? And secondly, has he got a charisma or not? Imran has always got charisma. That's why he was such a popular cricketer and then a populist politician. There's no lack of charisma in Imran, even at age. क्या है आजकल उसकी उम्र? Official उम्र क्या चल रही है आजकल इमरान? 70 plus, चले 72, ठीक है? Myth जो है ना, myth. What I've used the word myth in my book is there are so many opinions about what middle class in Pakistan is. Because ये वो class है दुनिया भर में political scientists मुझसे बहुत बड़े-बड़े वो struggle करते हैं कि middle class होती क्या चीज़ है. कोई इसको aspirational class कहता है, कोई इसको क्या कहता है. बड़ा एक और यहाँ पाकिस्तान में unfortunately जब ये class grow कर रही है इस पे कोई study नहीं है. एक आध आई है जो बहुत ही surface level की हैं. Myths हैं इस class के बारे में कि ये class है, ये dictatorships को हमेशा करती है, western भी है, जैसे उन्होंने फरमाया western, anti-western, I don't know क्या है, तो ये वो भी है, तो ये सब myths हैं. That's why कि उन myths को तोड़ने की कोशिश मुझे नहीं की, तो explore करने की कोशिश की है कि क्यों. So Imran Khan is not a myth as such. हाँ, जब आप इमरान खान को मसीहा बना देते हैं ना, ठीक है, कि जी because वो पता नहीं उसने क्या क्या तीर मारे हैं, those are myths. And populism अगर आप देखें is all about myths. आपकी nationalism हो, आपकी patriotism हो, सब myths पे based है. Myths का मतलब ये नहीं कि इसमें झूठ है, लेकिन myths is exaggerated truths or exaggerated facts. So Imran Khan, charisma, he's never lacked charisma at all. We are out of time. First of all, thank you to all the panelists for being here with us. And I would also really like to thank
all of you that came, we might have said things that you disagree with. But वो जो इख्तिलाफ राय है उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें. अगर कोई कुछ यहाँ पर कह रहा है तो वो किसी ना किसी तहकीक की बुनियाद पर कह रहा होगा. एक पूरी किताब है. Just because you disagree with it does not make somebody biased, does not make somebody an atheist. So thank you for coming out, and thank you to all the panelists. So Oxford University Press is changing too. Whether we are making learning work for anyone, anywhere, anytime, connecting a global community of English language learners, or helping